मैं सर दिग्विजय सिंह, बीटेक फ्रॉम IIT BHU। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के ऐसे कंसेप्ट्स जिसको करके आप बिल्कुल 30 क्वेश्चन को बहुत आसानी से IIT JEE में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल कोटा टीचिंग का है और 3-4 साल दिल्ली टीचिंग का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और इसमें हमने कोटा में यही देखा है कि आखिरकार कौन से क्वेश्चन को हमें मेंटली करने की ज़रूरत होती है, कौन से क्वेश्चन को हमें पेन और पेपर से करने की ज़रूरत होती है, ये एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है। और वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा अपने वीडियोस में। आप कंटिन्यूसली बने रहिए और देखिए वीडियोस को। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? देन व्हाट अबाउट probability? First of all, need to learn the terms. जो पहली चीज़ हमारे पास आती है इसमें, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, that is a random experiment. Okay, what is the random experiment? This is a very important thing. About random experiment, we can say an experiment whose outcomes are not certain. An experiment whose outcomes are not certain. Certain, it means fixed. The experiment whose outcomes are not fixed. Suppose, in example, we want to learn it. Throwing of a fair dice. जब हम एक फेयर डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास क्या अपीयर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, है ना? नथिंग अबाउट श्योर कि भी क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है. दीज आर कॉल्ड द इवेंट, है ना? सपोज इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टॉसिंग, है ना, वी आर टॉसिंग 2 coins and this is called a sample space basically. Then we are tossing 2 coins, then what are the possibility we have, है ना? What are the possibility? Head tail, tail head, tail. These are the possibilities we can take. Now suppose we are tossing a coin which is two-headed on both the sides, like in Sole film. Amitabh Bachchan tosses a coin which have both sides head faces. So there the outcome is certain. That is not called the random experiment. The random experiment is that experiment in which outcomes should not be certain. Is that clear? Now the second term, where I need to learn the second term, that is the sample space. These are the important thing. Yeah, so this will be a sample space. It means we can say the collection of Possible outcome. all the possible, very good, all the possible outcomes is the sample space. Learn it. Possible outcomes, not the exact outcomes. Sample space is the collection of possible outcomes. This is a very important thing. Okay? Now we can take the example. We are tossing A coin. 1 coin and a dice simultaneously. Okay? Simultaneously we are tossing a coin and a dice. Then what are the possible cases appeared? Head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. It means the coin is faces head and die has any face, 1 2 3 4 5 6. Or the possibility is tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. Got it? The coin is faces tail and die has any of the number 1 2 3 4 5 6. Okay? Suppose we have a question here, no? We have a question and solve it. We have a question. A coin is tossed. Fast. A coin is tossed if it faces
ahead, a die is thrown, otherwise the coin is tossed again, otherwise the coin is tossed again. Again, what will be the sample space? What will be the sample space set? What will be the sample space set? For solving any question, just learn the language of the question. This is a very important thing. लैंग्वेज जब तक समझेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. इन दिस क्वेश्चन, what is the main language of this question? A coin is tossed first. A coin is tossed. If it faces head, a die is thrown. Otherwise, the coin is tossed again. It means, suppose we are tossing a coin and we got head on the coin. If we got head on the coin, a die is thrown simultaneously. It means the possibility is head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. These are the 6 possibilities with head. Otherwise it means when head doesn't appears, it means tail appears. When tail appears, the coin is tossed again. It means the second time we don't have a die, we have a coin right now. Then we can say ki when tail appears, either the head or the tail again occurs. These are the possible cases. This is the sample space S, and number of elements in sample space will be 8. Got the point? Is that clear? Now another question. Second question. A die is thrown. A die is thrown if it shows even number. If it shows even number, a coin is tossed, or otherwise the die is thrown again. Write down the sample space. Write down NS, number of elements in sample space. What could we do here? See here. First, the question says that a die is thrown. It means, and it faces even number. It means there are the 2, 4, 6. 3 possibilities. In all the 3 possibilities, a coin is tossed. 2 head, 2 tail. 4 head, 4 tail. 6 head, 6 tail. Otherwise 1, 3, 5 appears on the die. In all these cases, 6 possibilities are there. 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. And similarly for 3, 1, 2, 3, 6. And then for 5, 1, 2, 5, 6. It means the NS will be 24. Now the very important thing, we want to tell the note. First point, if we toss a coin n times, or n coins are tossed one time, both are same and have ns is equals to 2 raised to power n. Is that clear? If a die is thrown n times, or
n dices are tossed one time. It shows what? It shows ns is equals to 6 raised to power n. In the case of dice, there are the 6 faces, hence it will be 6 raised to power n. In the case of coins, there will be the 2 faces, hence it will be 2 raised to power n. Got the point? Clear? Now, after the sample space, suppose if 2 coins and a die are thrown together, what will be ns? This is your homework. Okay. Now, the next term related to the probability is the event. And one more thing is important there. You must have to write in note also. एक बहुत ख़ास बात है जिसको हमको नोट में लिखना चाहिए, ठीक है? और जो हमने अभी नहीं लिखा, नोट में एक और बात लिखना है कि सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इन सेट्स, ठीक है? ns and nu are both the same things. Universal set मतलब a set which containing all the elementary sets. It means like if India is the universal set, all the states are the elementary sets. Like Haryana, Punjab, UP, Rajasthan, all these are the elementary sets. Got it? This is an important thing. Now we have to start with the next term related to probability is event. What is event? Tell me what is event? The total favorable is important one. The total favorable outcomes are also called odds, results, anything, etc. The total favorable outcomes is called event set. Is that clear? Suppose when we are tossing a coin and in mind I want to appear head, then head is a favorable case. Suppose we are tossing 2 coins and we want to get at least one head on the coin. Suppose, take an example, right of it. If we are tossing 2 coins and we want at least one head. What do you mean by at least word? At least word का मतलब होता है कम से कम, है ना? तो हमने कहा कि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं और हमें कम से कम 1 हेड चाहिए, तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी और कम से कम 1 हेड वाला जो हमारा आंसर होगा क्या क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हेड टेल, टेल हेड, और एटलीस्ट 1 हेड में दोनों हेड वाला भी केस हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज द इवेंट सेट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सेट विल बी 3. Is that clear? Now the next term appears is the types of event. है ना? What are the types of event? These are the very important terms through which you can learn the chapter. Types of event. The first is the single tone event. Single tone event. Single tone event, it means the event having only one term, it means element, event having only one element. Got it? This is a single tone event. The second one is
this is a very important thing. Mutually exclusive events. See it. Mutually exclusive events. Okay. When there is no any common event, when there is no any common events in between two given set of events, then they are called mutually exclusive events. What does it mean? What does it mean? Tell me, what does it mean? Suppose when we are tossing two coins, when we are tossing one coin, okay, and even is the event getting an odd number. Got it? E2 is the event getting an even number. Got it? Then what are the possibilities of E1? Tell me. 1, 3, 5. What is the possibility of E2? 2, 4, 6. There is, yes. Dice. It should be dice, no? Yes. Sorry. There should be the dice. We are tossing one die, of course. Take care. Then what are the E1 and intersection E2? There will be the 5. Nothing. So number of element in E1 intersection E2 is 0. There is no common element. So they are the mutually exclusive events. Okay. इसको हम प्रोबेबिलिटी, इसको हम सेट की भाषा में also called disjoint sets. Mutually exclusive are also called disjoint sets. There should be no common. It means A intersection B is equals to 5. Then A and B are called the exclusive events, mutually exclusive events. ठीक है. Next one is mutually exhaustive. See here, exhaustive events. Mutually exhaustive events. What are the mutually exhaustive events? When E1 union E2 union E3 up to so on union En is equals to sample space. Then E1 E2 E3 En are called mutually exhaustive events. What does it mean? जब हमने कई सारे इवेंट्स हमारे सामने और सबका यूनियन सैम्पल स्पेस हमें मिल जाए, ठीक है, सबका यूनियन हमें क्या मिल जाए? सैम्पल स्पेस मिल जाए. हम एक एग्जांपल से समझते हैं. व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन, वी आर टॉसिंग अ डाइस, and let we have event E1 getting an odd number, okay, and E2 is again getting a even number. Then are they the mutually exhaustive events? Of course they are the exhaustive events. It means it will contain 1, 3, 5, it will contain 2, 4, 6, and when we will take the union of E1 and E2, it will get 1, 2, 3, 4, 5, 6.
यानी जब यूनियन करने से हमें टोटल एलिमेंट्स मिल जाए सैम्पल स्पेस के। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स एकदम अपोजिट हो, ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है। माइंड में कभी कभी ये लॉजिक आता है कि नहीं यार, जो एक्सक्लूसिव होगा वो एग्जॉस्टिव नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव वाले एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव वाले एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव कुछ भी ना हो, ठीक है। अच्छा, एक सबसे खास बात कि यदि दो इवेंट एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। व्हेन, ये नोट में याद रखने की चीज़ है, व्हेन A and B are exclusive as well as exhaustive, then the sum of the probabilities of those will be 1। उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव क्या इवेंट है, कोई इसमें डाउट? Now the term appeared, the definition of probability, the classical definition of probability, ठीक है। classical definition of probability, probability का definition क्या है? probability का मतलब होता है चांस, ठीक है। तो चांस कैसे निकालेंगे किसी चीज़ का? यदि चांस फाइंड करना हो हमें, चांस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? probability of any event E, it means this is the ratio of number of total favorable cases upon number of total of possible cases। पॉसिबल केसेस और फेवरेबल केसेस में अंतर समझ में आता है ना? पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें लेनी है हमें, और फेवरेबल में हमें वही लेना है जो हमें क्वेश्चन कह रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सपोज वी आर इन नीड ऑफ सॉल्व अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को देखते हैं ना, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन 52 Sundays, सेकेंड क्वेश्चन 53 Sundays in a leap year। गॉट इट? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कई बार आता रहता है ये। तो सबसे पहली बात तो हम सिचुएशन को समझेंगे कि हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, फिर फेवरेबल केस क्या है। तो सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास, बताओ? 366 डेज, ठीक है। अब 366 डेज में हम बात करेंगे तो टोटल एग्जैक्ट संडेज कितने होंगे? 7 से डिवाइड करोगे, 52 टाइम्स 364 एंड 2 रिमेनिंग, 2 डेज रिमेनिंग, है ना। इट मीन्स 52 वीक्स इन 366 डेज देयर विल बी 52 वीक्स। 52 वीक्स का मतलब है कि 52 संडे तो श्योर होगा ही होगा, ये तो श्योर हो गया, श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। एंड फॉर 53 संडे, है ना, 53 संडे की यदि बात करें हमें, तो डेफिनेटली इन 2 डेज में एक संडे होना चाहिए। तो NE हमारे पास है 2 डेज, है ना, और जो हमें एक संडे होता है वो 7 डेज में होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारा होगा इस केस में, जो 53 संडे की बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/7 चांस ऑफ गेटिंग अ संडे इन 2 डेज, दैट विल बी chance of getting a Sunday in 2 days will be 2/7. So this is the probability of getting 53 Sunday in a leap year, and this is the probability of getting। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वैसे भी हमें जानना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 कब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कब होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से 1 के बीच कब होता है?
इस बात को समझना चाहिए। पॉजिटिव इवेंट कब होगा? 0। इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हमारे पास क्या हो, इम्पॉसिबल हो। पॉजिटिव 1 कब होगा बताओ? श्योर इवेंट के केस में, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में, है ना। पॉलिटिक कभी भी आपका इसके बीच में नहीं कर सकता, ठीक है, गॉट इट। लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट इक्वली लाइकली इवेंट्स, ओके। इक्वली लाइकली events, it means events having, Same probability. yeah, events having same probabilities are equally likely, equally likely. They are not feeling the same, but they have their probabilities have been same, ठीक है। Now the next thing is set theoretical explanation of probability, okay। We can define completely probability by using the set theory always. So this is a main thing, है ना। Suppose we want to define, the first concept is union. Union word basically used as either or in the language, है ना? Either or, यानी either or word यूज होता है बेसिकली यूनियन के लिए, ठीक है। Suppose we have the two sets A and B and we want to union of A union B, okay। Then there are the 4 cases of A and B possible. A and B have some elements as common. A and B have no elements common. It means exclusive events. This is the case of exclusive events, है ना, no common. Otherwise, third case is all elements of A is common with B. It is called A is a subset of B. Exactly. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Exactly. When it is divided by ns, when it is divided by ns, the term, and this is the A union B portion, है ना, completely this, है ना, ये पूरा A यूनियन B का पोर्शन है अपने पास। तो अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया पी ए यूनियन B इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑल्सो कॉल्ड, this is called addition theorem of probability, addition theorem of probability, in which A union B has the probability PA plus PB minus PA intersection B. Here in this case the A union of A and B will be this, and the probability of A union B here it is directly PA plus PB, because बताओ क्यों? Because PA intersection B is 0, there is no element in intersection common, and here in this case we want to find the A union B, suppose, and so PA union B will be directly equals to PB, because number of element in A union B in this case is the number of element in B, clear? Because all the elements of A lies in B, hence B is the bigger set, the probability will be same. The second situation is for A intersection B. Basically A and B is the word used for A intersection B, A and B. Suppose we have again the cases of common elements, and we have the cases of no common elements, and we have the cases of
all the elements of A is common with B. Okay, in this case the intersection will be this portion, then PA intersection B will be PA plus PB minus PA union B. Clear? Here in this case PA intersection B will be 0. It means in the case of exclusive events, the probability of their common occurrence will be 0. In this case PA intersection B will be, tell me? Of course the intersection will be A, the common elements. ठीक है? Now the third situation is for complement of a set or complementary events. Yeah, listen, when you finish, you should tell him to pick up all your stuff and close the doors. Because that is very important, because no one comes here, so the doors are left. Okay, I'll do. Thank you. A complement. A complement, it means universal minus A. A complement means out of A. Got the point? Out of A. This is the portion out of A. Is that clear? And then probability of A complement will be probability of universal set minus probability of A. And probability of universal set will be 1. Universal set की probability कितनी होगी हमारे पास? 1. And here the formula arises for probability of not A, it means 1 minus probability of A. Is that clear? Complement set, it means A dash, AC, A complement, or we can say not A. All these are the same things. ठीक है? Now, the important thing is here, one more thing is important. The odds in favor. Odds in favor of occurrence of any event E is m ratio n, then probability of E will be m by m plus n, the first point, and probability of non-occurrence of E will be n by m plus n. Second, if odds in against of E is m ratio n, then probability of E will be n by m plus n, and E complement is m by m plus n. पहले इसको समझते हैं ये है क्या बेसिकली. जैसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें ना डाटा ना देखे, हमें रेशियो गिवन होता है सपोज, है ना. We can understand it by a question. If in a classroom the ratio of boys and girls is 2:3, then find the probability of getting a boy from the classroom. तो इसका मतलब हमें क्या समझना है यहाँ पर? इसका मतलब ये समझना है सबसे पहले तो ये कि इफ़ 2:3 इज odds in favor, ओके, odds in favor ऑफ बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, है ना. यदि odds in favor है तो ये जो पहला है वो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को शो करेगा. ये पहला बॉयज़ को शो करेगा हमारा, और दूसरा गर्ल्स को शो करेगा. ठीक है, यदि odds in favor गिवन है तो यहाँ पर probability ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय इज़ 2/5. इफ़ 2:3 इज़ द odds in against, है ना. यदि odds in against है ये, हाँ, यदि odds in against है ऑफ बॉयज़ रेशियो गर्ल्स,
इसका मतलब है कि जो पहला है वो गर्ल को शो कर रहा है, जो दूसरा है वो बॉय को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय विल बी 3/5। दिस इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई क्या है ये ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल। Suppose we are going to discuss this question. Here the question is, a box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 green marbles, 5 marbles are drawn. 5 marbles are drawn. Okay, from the box. Find the probability of, the first question is all will be blue. Second, at least one is green. At least one is green. Is that clear? देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने पास कि अपने पास यहाँ डाटा में क्या है, ध्यान से देखेंगे तो एक बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है अपने पास, और इसमें 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं, 30 ग्रीन मार्बल्स हैं, और इसमें से 5 मार्बल्स ड्रॉन किया गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारे ब्लू हो, तो जो पांचों मार्बल लिए गए वो ब्लू में से होने चाहिए। ठीक है, पांचों मार्बल होने चाहिए ब्लू में से। इट विल बी 20C5 अपॉन 60C5, and at least one will be green. At least one. If any time you have to find probability of at least one, it can be obtained by 1 minus probability of no will be green. No will be green. It means 1 minus all the 5 will be selected from red and blue. It means 30C5 upon 60C5. This is the situation here.